आज हमारा टॉपिक जो है वो इक़्तिदार आला है। इसकी तारीफ़ और इसकी अक़साम और इसकी ख़ुसूसियात कि व्हाट इज़ सॉवरेनिटी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सॉवरेनिटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सॉवरेनिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। इक़्तिदार आला को हम इंग्लिश में सॉवरेनिटी कहते हैं, जबकि हम इसे उर्दू में इक़्तिदार आला या हाकिमियत आला कहते हैं। ये लैटिन ज़ुबान के लफ्ज़ सुप्रानस से अख़ज़ किया गया है और सुप्रानस के मानी उर्दू में हम आला, बरतर, बाला, फ़ाइक यानी आला तरीन, और अंग्रेज़ी में इसे सुप्रीम भी कह सकते हैं। जहाँ तक इक़्तिदार आला के मफ़हूम का ताल्लुक़ है तो ये ऐसा इक़्तिदार है, यानी ऐसी पॉलिटिकल पावर है जो दूसरी तमाम इक़्तिदारों से आला व बरतर है। ये स्टेट की वो क़ुव्वत है, यानी स्टेट की वो पावर है जो कि स्टेट को इस काबिल बनाती है कि वो कवानीन बनाए, उन कवानीन को नाफिज करे और उन्हें तोड़ने वालों को सजा दे सके। रियासत की असल ताकत का नाम इक़्तिदार आला है। उस वक्त तक कोई स्टेट आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं हो सकती जब तक कि उसके पास इक़्तिदार आला ना हो। स्टेट की सॉवरेनिटी स्टेट को ऑटोनमस इंडिपेंडेंट बनाती है। सबसे पहले एक फ्रेंच फिलोसोफर जैन बॉर्डन ने सॉवरेनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 16th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल थ्योरीज इक़्तिदार आला से मुतालिक एंडिवोर हुई हैं, ये उन्हें पॉलिटिकल स्कॉलर ने या पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने उनको डिस्क्राइब किया है, उसकी बुनियाद उन्होंने प्लेटो की मिसाली रियासत, जिसमें बादशाह को इक़्तिदार आला का मुहाफ़िज़ करार दिया गया और बादशाहत को लामहदूद इख्तियारात से नवाजा गया, क्योंकि सॉवरेन जो पावर होती है वो अनलिमिटेड पावर्स की हामिल होती है और इक़्तिदार आला जो है या सॉवरेनिटी जो है, जिसे अगर हम पॉलिटिकल सुप्रीम पावर की हैसियत से लेते हैं, मुसन्निफ़ीन ने इसकी मुख्तलिफ जोहतें, शक्लें और तारीफ़ात की हैं। जैन बॉर्डन ने सबसे ज़्यादा इसको वाज़ेह और तफसीली अंदाज में पेश किया है। इसके बाद आने वाले मुफक्किरीन में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जैन जैक्यूस रोसियो और जॉन ऑस्टिन जो थे, उनके नज़रियात इस सॉवरेनिटी की डेफिनेशन के बगैर नहीं हैं। जैन बॉर्डन ने सॉवरेनिटी के दो पहलू बनाए हैं और दो एस्पेक्ट ऑफ द सॉवरेनिटी उसने डिफाइन किया है। एक तो उसका इंटरनल एस्पेक्ट है और इसका दूसरा जो है वो एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, यानी अंदरूनी इक़्तिदार आला और बैरूनी इक़्तिदार आला। जहाँ तक अंदरूनी इक़्तिदार आला का ताल्लुक़ है कि रियासत के अंदर पाए जाने वाले तमाम अफराद और इसके अलावा वो तमाम इदारे, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे गैर सरकारी हैं, चाहे नीम सरकारी हैं, वो सभी रियासत के ताबे हैं। ये तो उसका है अंदरूनी इक़्तिदार आला। जबकि बैरूनी इक़्तिदार आला से मुराद ये है कि एक रियासत जो है वो अपने तमाम बैरूनी ताल्लुकात के बावजूद हर किस्म के बैरूनी दबाव से आज़ाद है।
और उसकी जो पॉलिसी फॉर्मेशन है या जो लेजिस्लेशन की उसके पास पावर है, उसके ऊपर कोई भी बैरूनी दबाव नहीं है। आज हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसकी तरफ से रियासतों पर कुछ पाबंदियां लगा दी जाती हैं और उन पाबंदियों को कोई भी स्टेट जो है उन रेस्ट्रिक्शंस को, उन लिमिटेशंस को, उन ऑब्लिगेशंस को कोई भी स्टेट जो है वो अपना एक मॉरल कंडक्ट समिति है कि उसको, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति है कि उन पाबंदियों को बाकायदा उनके मुताबिक काम करे और उन पाबंदियों के खिलाफ ना जाए। अब हम मुख्तसरन कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और थिंकर्स की जो डेफिनेशन है सॉवरेंटी से मुतालिक, उनको हम टच करेंगे। कैल्सन जो है, उसने, जो पॉलिटिकल थिंकर है, वो ये कहता है कि इन इट्स ओरिजिनल एंड ओनली स्पेसिफिक मीनिंग सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी। वो कहता है कि जो इसके हकीकी मानी हैं और जो सिर्फ स्पेसिफिक मीनिंग है, मखसूस मानी है, वो ये हैं कि ये एक आला व बरतर इख्तियार है। E.H. कार और क्विंसी राइट ने भी इक़्तिदार आला की डेफिनेशन की है। उन्होंने इसे ताकत और इख्तियार का नाम दिया है। जैन बॉर्डन जो है वो सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। जैन बॉर्डन की जो तारीफ वो ये कहता है कि सॉवरेंटी जो है ये एक बहुत ही बरतर से इख्तियार है जो कि शहरियों के ऊपर स्टेट का है और उसकी रियाया के ऊपर है और कोई भी कानून उसे रोक नहीं सकता। जॉन बॉर्डन, थॉमस हॉब्स, दोनों की तारीफात जो हैं अपने अपने अंदाज में हैं, क्योंकि जॉन बॉर्डन की जो डेफिनेशन है वो तो एक ऐसी पावर और ताकत को बयान कर रहा है जो कि सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स के ऊपर है। और थॉमस साहब की किताब जिसका नाम लेवियाथन है, उसमें उसने लिखा है कि इक़्तिदार आला जो है वो एक बहुत ही लामहदूद, अफजल और मुकम्मल ताकत का नाम है। उसने इसे बहुत ही सुप्रीम और कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव ताकत का नाम दिया है। कहता है कि ये एक कंप्लीट, मुकम्मल ताकत है, इसमें कोई कमी नहीं है। यानी इक़्तिदार आला जो है ये बगैर किसी कमी के अनलिमिटेड पावर्स का नाम है और मुकम्मल पावर्स का नाम है। हुगो ग्रोशस कहता है कि इक़्तिदार आला ऐसी ताकत है जिसको किसी सूरत झुठलाया नहीं जा सकता। यानी कोई भी पॉलिटिकल थिंकर जो है सॉवरेंटी को निगेट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट का वजूद सिर्फ सॉवरेंटी के साथ है और सॉवरेंटी के बगैर स्टेट का वजूद जो है वो कंप्लीट नहीं होता। कंपाइलिंग एलिमेंट्स में भी आपने पढ़ा है और उसमें स्टेट के जो अनासर तरकीबी हैं उसमें हम देखते हैं कि इक़्तिदार आला के बगैर स्टेट कंप्लीट नहीं होती। बर्जियस कहता है कि ये एक मुतलकुल अनान, लामहदूद और बुनियादी ताकत। इसमें उसने 3 बातें कही हैं कि इसको एब्सोल्यूट पावर का नाम दिया है। एब्सोल्यूट पावर जो मुतलकन पावर होती है, और अनलिमिटेड भी उसने वर्ड इस्तेमाल किया, और इसके अलावा उसने इसको ओरिजिनल ताकत का, ओरिजिनल पावर का नाम दिया है। और ये पावर जो है रियासतों के तमाम बाशिंदों और उनके ग्रोहों पर हावी है। रियासत जिसके पास इक़्तिदार आला मौजूद है वो अपने तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ वहाँ पे ग्रुप्स हैं इंसानों के, सभी के ऊपर वो हावी है। विलो भाई
कहता है कि इक़्तिदार आला रियासत की बरतर मंशा का नाम उसे स्टेट की विल का नाम देता है। जो सुपीरियर पॉलिटिकल स्टेट की विल है, यानी स्टेट की मर्सी का नाम, स्टेट की मंशा का नाम जो है वो इक़्तिदार आला है। देवगी कहता है कि इक़्तिदार आला वो आला ताकत है जिसकी वजह से रियासत के अवाम को अहकाम दिए जाते हैं और उन्हें उनका पाबंद किया जाता है। यानी ऐसा आला इक़्तिदार, ऐसी आला ताकत, बात तो वही कहता है जो पहले कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। इसमें उसने ऑर्डर्स जो दिए जाते हैं स्टेट के अंदर इदारों को और अवाम को, वो सारे ऑर्डर्स जो हैं, वो सारे अहकामात जो हैं जिनके अवाम पाबंद होते हैं और इदारे भी पाबंद होते हैं, वो अहकामात देने वाली जो पावर है उसका नाम इक़्तिदार आला है। गार्नर ये कहता है कि इक़्तिदार आला का रियासत के अंदर वो मकाम है, यानी इक़्तिदार आला रियासत का वो अंसर है जिसकी बिना पर रियासत की मंशा आज़ाद होती है और वो किसी इदारे की पाबंद नहीं रहती। यानी रियासत की जो विल है वो मुकम्मल इंडिपेंडेंट विल है और वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करे, अपने इंटरनल सिस्टम में और एक्सटर्नल मामलात में जैसे चाहे वो मामलात को निपटाए, जंग की जानब जाए, अमन की जानब जाए, जिस तरह के चाहे मुआहदात करे। तो स्टेट का इक़्तिदार आला स्टेट को ये पावर देता है कि उसकी मंशा को आज़ाद कर देता है। हालांकि मुख्तलिफ अक़साम भी हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि लीकॉक क्या कहता है। लीकॉक ये कहता है कि सिर्फ कानूनी इक़्तिदार आला जो है वही दुरुस्त है। कानूनी इक़्तिदार आला की पुश्त पनाही पर सियासी इक़्तिदार आला को तलाश करने से इक़्तिदार आला का सही मकाम और कदर ख़त्म हो जाती है। वो कहता है कि असल में लीगल सॉवरेनिटी ही सब कुछ है, और जब हम पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को लीगल सॉवरेनिटी की बैक पे देखेंगे या उसे तलाश करेंगे तो फिर इक़्तिदार आला जो है वो अपना मकाम खो देगा। इस तनकीद के बावजूद जदीद दौर में ख़ास तौर पर कामयाब अगर हम जमहूरी मुल्कों में देखते हैं तो पॉलिटिकल इक़्तिदार आला जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब जहाँ तक अवामी इक़्तिदार आला का ताल्लुक़ है तो अवामी इक़्तिदार आला 17वीं सदी का जदीद नज़रिया है। 17th सेंचुरी में, क्योंकि नज़रिया मुआहदा इमरानी जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं, जिसमें बादशाह जो है वो इक़्तिदार आला का असल मालिक है और बादशाह की मर्ज़ी के बगैर, चूँकि उस वक्त मोनार्कीज़ होती थीं, किंगडम्स होती थीं, डायनेस्टीज़ होती थीं, सल्तनतें थीं जिसमें बादशाह स्याह सफ़ेद का मालिक यानी मुराद तमाम पावर्स बादशाह की होती थी और बादशाह की ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून होता था। उसकी आंख का इशारा या उसकी उंगली का इशारा जो था वो भी कानून साजी करता था, वो जो कहता था वही कानून होता था। लेकिन जब 17वीं सदी में ही बादशाह के ख़िलाफ़ तहरीकें चलना शुरू हुईं तो मालूम हुआ कि अवाम इक़्तिदार आला को एक मर्द के हाथों में देने के कायल नहीं है। यानी जब ये बात शुरू हुई कि बादशाह के ख़िलाफ़ जब एक अपराइजिंग होना शुरू हुई और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की वजह से, पॉलिटिकल अवेयरनेस की वजह से, और जब लिबरलाइज हुए, कॉन्शियसनेस लिबरलाइज हुआ मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल इनोवेशन से, या जो एक रिनाइसांस का दौर आया उसके अंदर मौजूद, जिसे हम पीरियड ऑफ द एनलाइटनमेंट कहते हैं, उस पीरियड के अंदर अवाम ने सवाल उठाना शुरू कर दिए और इन सवालों का फोकस जो था या जो टारगेट था वो बादशाह की ज़ात या उसके इख्तियारात थे। अब इक़्तिदार आला जो है उन्होंने कहा कि हम किसी एक फ़र्द वाहिद को देना नहीं चाहते कि वो तमाम पावर्स का मंबा और सरचश्मा हो जाए, और आवाम ने सोचा कि ये पावर्स जो हैं ये अब आवाम की हैं, फ़र्द वाहिद की नहीं है। और इस तरीके से यूरोप के अक्सर ममालिक में अवामी जिदोजहद दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती गई।
اور اس دوران میں روسیو جو کہ فرانس کا ایک پولیٹیکل مفکر ہے، جان جیکوس روسیو، اس نے ایک نیا نظریہ دیا جو کہ جنرل ول کے حوالے سے تھا کہ عوام کی جو کلیکٹیو کانسینٹ ہے، جو کلیکٹیو مرضی ہے، منشاء عام جو ہے، اس کو اس نے سوورن کہا کہ عوام کی کلیکٹیو ول جو ہے وہ سوورن ہے، جس میں جو پاور ہے سوورنٹی کی وہ عوام کے پاس ہے، یعنی عوام اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ اور اس طریقے سے اس نظریے نے ثابت کیا کہ انسان اپنی آفرینش سے، اپنی پیدائش سے مکمل صورت میں آزاد ہونا چاہیے تھا اور آزاد تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد وہ ہر طرف سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ دراصل اس کا خیال تھا کہ بادشاہ نے اپنے ظلم و استبداد سے عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کر کے انہیں بے پناہ لطیف جذبات سے محروم کر دیا ہے، لہذا عوام کی آزادیاں جو ہیں وہ سلب ہو چکی ہیں اور ان پاورز نے ان کو زنجیریں ڈال رکھی ہیں، اور اس طریقے سے عوام اپنے حقوق کے اصول کی جد و جہد میں وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ اور لیکن اس نظریے نے عوام کے اندر ایک نیو اسپرٹ کو جنم دیا، ایک نیو انتھیوزم کو جنم دیا، ایک نیا جذبے کو جنم دیا، اور اس جذبے کے تحت عوام نے جد و جہد کرنا شروع کی اپنے حقوق کے لیے۔ اور اس طریقے سے جو بادشاہ کی ذات تھی، جو بادشاہ کی پاورز تھی، ان کے جو بت تھے جن کی صدیوں سے عوام پوجا کر رہے تھے، اب آہستہ آہستہ وہ بت ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اور روسیو کی تحریروں نے عوام کے اندر زندگی کی وہ روح پھونک دی جس نے آج ماڈرن اسٹیٹ کے اندر ڈیموکریٹک جو ایک سسٹم ہے جس کے تحت طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں، سوورن عوام ہیں، اس کو جلا بخشی، اور اس طریقے سے عوام نے اپنی آزادی جو تھی وہ حاصل کرنا شروع کر دی، اور بادشاہ کی مطلق الانانیت کا جو تصور تھا وہ رفتہ رفتہ دم توڑتا چلا گیا۔ لارڈ برائس کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو عوامی اقدار اعلیٰ جو ہے، جس نے جمہوریت کو ایک کانسیپٹ کو ایک بنیاد فراہم کی ہے، اور مختلف ریاستوں کے اندر جو قانون بنانے والے ادارے ہیں وہ مارس وجود میں آ گئے ہیں، اور عوامی احساسات اور ان کے لطیف جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہر جمہوری ریاست کی جو پارلیمنٹ ہے، جو عوام کی نمائندہ باڈی ہے، جو عوام کی سوورنٹی کا ایکسپریشن ہے، وہ وہاں قانون سازی کرتے ہیں، اور اس طرح عوامی اقدار اعلیٰ جو ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی اقدار اعلیٰ کی، تو سیاسی اقدار اعلیٰ عوامی اقدار اعلیٰ ہی کا ایک ڈائمینشن ہے، ایک ایسپیکٹ ہے۔ کرائسسٹ کے نزدیک عوامی اقدار اعلیٰ کا صحیح اور واضح تعین کرنا انتہائی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ عوامی اقدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست میں ایک قانون ساز ادارہ ہو جو قانون سازی میں مکمل صورت میں خود مختار ہو، اور اس قانون ساز ادارے کے اراکین کو عوام منتخب کریں، اور وہ جو قانون ساز ادارہ ہے جس کو جو بھی نام دیا جائے گا، پارلیمنٹ کا نام دیا جائے گا، بائی کیمرل یا یونی کیمرل لیجسلیچر کا نام دیا جائے گا، اس کے انتخابات باقاعدگی سے کروانے چاہیے، اور اس میں ہر ملک کے اندر موجود ہر بالغ جو ہے اس کو حق حاصل ہو، یعنی اڈلٹ فرنچائز کی اس نے بات کی ہے کہ بالغ حق رائے دہی کا ملنا چاہیے
ہر بالغ جو ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، وہ اوپائن کرے، اپنی اوپینین دے، اپنی کانسینٹ اگر وہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے، اگر وہ ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے کسی چیز کو تو ریجیکٹ کرے. یعنی عوامی جو ججمنٹس ہیں ان کے بغیر اس لیجسلیٹو باڈی کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس قانون ساز پر عوام کی مکمل نگرانی ہو تاکہ عوام کی خواہشات اور مفادات کو تحفظ ہو سکے اور قانون ساز ادارے کو آمرانہ اقدامات سے روکا جا سکے. یعنی جو لیجسلیٹو باڈی ہے کوئی ایسا قانون نہ بنائے جو عوام کی مرضی کے خلاف، جو عوام کی ویلفیئر اور بیٹرمنٹ، ایسی قانون سازی میں جو یہ پارلیمنٹ کر رہی ہو یا قانون ساز ادارہ کر رہا ہو وہ عوام کی خواہشات کے تابع ہو اور ان کے مفادات کو تحفظ دے سکے، اور کسی بھی قانون ساز ادارے کو آمرانہ اقدامات سے روکا جا سکے. اس کے علاوہ عوام کے نمائندوں کی باقاعدہ جو ہے جواب طلبی ہونی چاہیے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور یہ جو لیجسلیٹو باڈی کے رکن ہیں ان کا محاسبہ ہمیشہ ہونا چاہیے اور جاری رہنا چاہیے. ہم جہاں تک اقدار اعلیٰ کے کچھ اور ڈیفینیشن کو ہم چیک کرتے ہیں، جس میں لاسکی نے یہ کہا کہ اقدار اعلیٰ جو ہے قانونی لحاظ سے تمام افراد اور ان کے اجتماعات پر فوقیت رکھتا ہے، یہ برتر بھی ہے اور یہ جبری اختیار بھی ہے. جبکہ چیمبرز 21 سینچری ڈکشنری کے اندر جو تعریف کی گئی اس میں اقدار اعلیٰ ایک اعلیٰ اور آزاد سیاسی طاقت یا اختیار کو کہتے ہیں. ڈکشنری آف ماڈرن پولیٹکس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ کسی ملک یا ادارے کا کسی متعین شدہ رقبہ یا کسی سیاسی متعلقات پر آزادانہ حکمرانی کا تصور اقدار اعلیٰ کہلاتا ہے. انسائکلوپیڈیا آف برٹنیکا تو اس کے مطابق سیاسی نظریہ میں ریاست کے فیصلہ سازی اور امن و امان قائم کرنے کے لیے سب سے بالا تر اور اعلیٰ اختیار کو اقدار اعلیٰ کہتے ہیں. جہاں تک قانونی اقدار اعلیٰ کا تعلق ہے تو یہ تو ایک اقدار اعلیٰ کی خصوصیت ہے کہ اقدار اعلیٰ جو ہے یہ ناقابل تقسیم ہے اور یہ ناقابل انتقال ہے. اور لیگل سوورنٹی جو ہے اس کو کچھ اس طرح سے واضح کیا جاتا ہے کہ لیگل سوورنٹی یعنی قانونی اختیار اعلیٰ ریاست اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو قوانین وضع کرتی ہے وہ اسی طاقت کے تحت وضع کرتی ہے. ریاست لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا نہیں ہونے دیتی، امن و امان قائم رکھتی ہے، اور ریاست جس ادارے یا شخص یا جماعت کو قانون سازی کا اختیار دیتی ہے اسے قانونی مقدر اعلیٰ کہتے ہیں، اور اس کے اختیارات کو قانونی اقدار اعلیٰ کا نام دیا جاتا ہے. اگر ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں ملکہ اور پارلیمنٹ مشترکہ طور پر قانونی اقدار اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں. امریکہ میں کانگریس قانونی اقدار اعلیٰ کی مالک ہے. کانگریس چونکہ ہاؤس آف ریپریزنٹیوز اور امریکن سینٹ پر مشتمل ہے اور لہذا امریکن کانگریس جو ہے اس کے پاس لیگل سوورنٹی ہے. لیگل سوورنٹی جو ہے اس میں ملک میں بنائے ہوئے مقننہ کے قوانین جو ہیں جن کو انتظامیہ کے ذریعے نافذ کروایا جاتا ہے اور قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کو عدلیہ کے ذریعے سزا دی جاتی ہے، یہ سب آئین و دستور کے مطابق ہوتا ہے. قانونی اقدار اعلیٰ کا تصور تھامس ہابز نے اپنے سیاسی نظریات میں پیش کیا. تھامس ہابز یہ کہتا ہے کہ قانونی اقدار اعلیٰ اپنے آپ میں جامع اور مکمل ہے اور اسے لامحدود اور ناقابل تقسیم اختیارات حاصل ہیں. اس کے خیال میں قانونی اقدار اعلیٰ ہر قسم کی پابندیوں اور رسم و رواج سے آزاد ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اقدار اعلیٰ کی خصوصیات کا جو ایک سوال ہے اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. اب ہم تھوڑا سا اس کو انگلش ورژن میں پڑھتے ہیں کیونکہ انگلش ورژن ہی پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹیٹ کے ایلیمنٹس ہیں یا دیگر ٹرمینالوجیز ہیں پولیٹیکل ورژن ہی ان کو بہتر انداز میں ڈیفائن کر سکتا ہے اور ایکسپلین کر سکتا ہے.
سوورینٹی اس کو ہم سیاسی نظریے کی حیثیت سے کس طرح ڈیفائن کریں گے تو اسے ہم اتھارٹی کہتے ہیں، پولیٹیکل اتھارٹی کہتے ہیں. And in the decision-making process of the state and in the maintenance of order. Sovereignty in political theory is a political authority. The concept of sovereignty, one of the most controversial ideas in political science and international law, is closely related to the difficult concepts of state and government and of independence and democracy. Derived from the Latin supranus through the French souverainet. The word French souverainet. The term was originally understood to mean the equivalent of supreme power. However, its application in practice often has departed from this traditional meaning. In history, French philosopher Jean Bodin, 1530 to 1596, used the new concept of sovereignty to bolster the power of French king over the rebellious feudal lords, facilitating the transition from feudalism to nationalism. سوسائٹی چونکہ اس کو وہ چینج کر رہا تھا کہ فیوڈلزم سے نیشنلزم کی جانب اس کو فیسلیٹیٹ کر رہا تھا، اور یہ ایک ٹرانزیشن ہو رہی تھی سوسائٹی کی، اور فیوڈل لارڈز کے خلاف جو تھا اور بادشاہ کے خلاف جو تھا، اس کی پاور کے خلاف جو ریبیلین تھی اس کو امپاور کیا جا رہا تھا. The thinker who did the most to provide the term with its modern meaning was the English philosopher Thomas Hobbes. (1588 to 1679). Thomas Hobbes argued that in every true state, some person or body of persons must have the ultimate and absolute authority to declare the law. To divide the authority, he held, was essentially to destroy the unity of the state. The theories of the English philosopher John Locke, 1632 to 1704, and the French philosopher Jean-Jacques Rousseau, 1712 to 1778, that the state is based upon a formal or informal compact of its citizens, a social contract through which they entrust such powers to a government as may be necessary for common protection, led to the development of the doctrine of popular sovereignty that found expression in the American Declaration of Independence in 1776. Another twist was given to this concept by the statement in the French Constitution of 1791 that sovereignty is one, indivisible, unalienable, and imprescriptible. It belongs to the nation. No group can attribute sovereignty to itself, nor can an individual arrogate it to himself. Thus, the idea of popular sovereignty, exercised primarily by the people, became combined with the idea of national sovereignty, exercised not by an unauthorized people in the state of nature, but by a nation embodied in an organized state. In the 19th century, the English jurist John Austin, 1719-1859, developed the concept
further by investigating who exercises sovereignty in the name of the people or of the state. He concluded that sovereignty is vested in a nation's parliament. A parliament, he argued, is a supreme organ that enacts laws binding upon everybody else, but that is not itself bound by the laws and could change these laws at will. This description, however, fitted only a particular system of government, such as the one that prevailed in Great Britain during the 19th century. Austin's notion of legislative sovereignty did not entirely fit the American situation. The Constitution of the United States, the fundamental law of the Federal Union, did not endow the national legislature with supreme power, but imposed important restrictions upon it. A further complication was added when the Supreme Court of the United States asserted successfully in Marbury versus Madison, the case of 1803, its right to declare laws unconstitutional through a procedure called judicial review. Although this development did not lead to judicial sovereignty, it seemed to vest the sovereign power in the fundamental document itself, the Constitution. The system of constitutional sovereignty was made more complex by the fact that the authority to propose changes in the Constitution and to approve them was vested not only in Congress but also in states and in special conventions called for that purpose. Thus, it could be argued that sovereignty continued to reside in the states or in the people, who retained all powers not delegated by the Constitution to the United States or expressly prohibited by the Constitution to the states or the people, in accordance with the 10th Amendment of the Constitution of the USA. Consequently, the claims by advocates of states' rights that states continue to be sovereign were bolstered by the difficulty of finding a sole repository of sovereignty in a complex federal structure, and the concept of dual sovereignty of both the Union and the component units found a theoretical basis. Even if the competing theory of popular sovereignty, the theory that vested sovereignty in the people of the United States, was accepted, it still might be argued that this sovereignty need not be exercised on behalf of the people solely by the national government, but could be divided on a functional basis between the federal and state authorities. Another assault from within on the doctrine of state sovereignty was made in the 20th century by those political scientists, Leon Devgy, Hugo Craby, and Harold J. Laski, who developed the theory of pluralistic sovereignty, the pluralism exercised by the various political, economic, social, and religious groups that dominate the government of each state. According to this doctrine, sovereignty in each society does not reside in any particular place but shifts constantly from one group or alliance of groups to another. The pluralistic theory further contended that the state is but one of many examples of social solidarity and possesses no special authority in comparison to other components of society. Sovereignty both grants and limits power. یہ اختیارات دیتی بھی ہے اور اختیارات کو محدود بھی کر دیتی ہے, کسی کے پارس کو کم بھی کر دیتی ہے, ختم بھی کر سکتی ہے. It gives states complete control over their own territory while restricting the influence that states have on one another. What is the issue of a sovereignty? Sovereignty issues arise if those organizations usurp the powers of self-governing nations. The International Criminal Court, for example, has attempted to assert jurisdiction over citizens of states
that never agreed to the court's statute. The question is about, do states have sovereignty? States may generally legislate on all matters within their territorial jurisdiction. This police power does not arise from the Constitution, but is an inherent attribute of the state's territorial sovereignty. The Constitution does, however, provide certain specific limitations on that power. How does a state gain sovereignty? Although it is not clearly laid out in law, a territory essentially becomes a sovereign state when its independence is recognized by the United Nations. If not, how? They could choose to declare their independence and to exist as an unrecognized state indefinitely. क्या किसी मुल्क का आइन सॉवरेंटी को तहफ़्फ़ुज़ देता है? The US Supreme Court has held that state sovereignty is protected by principles of common law rather than explicit constitutional guarantees. Under the 10th and 11th Amendments of the United States Constitution, the state sovereignty has been a major issue in American political history. What are two aspects of sovereignty? The current notion of state sovereignty contains four aspects consisting of territory, population, authority, and recognition. What is the role of the sovereign? The sovereign acts as a focus of national identity, unity, and pride, gives a sense of stability and continuity, officially recognizes success and excellence, and supports the ideal of voluntary service. In all these roles, the sovereign is supported by members of their immediate family. The question, who gives sovereignty? Popular sovereignty is the principle that the authority of a state and its government are created and sustained by the consent of its people through their elected representatives, ruled by the people, who are the source of all political power. The question, what makes India a sovereign state? How India became a free nation on August 15, 1947. It declared itself a sovereign, democratic and republic state with the adoption of the Constitution on January 25, 1950. January 26, 1950. The Constitution gave the citizen of India the power to choose their own government and pave the way for democracy. In accordance with the Islamic concept of sovereignty, God is the sovereign Lord of all by an incontestable right as the creator, owner, and possessor of heaven and earth. Sovereignty is an attribute of God based upon the premise that God, as the creator of heaven and earth, has absolute right and full authority to do or allow whatever He desires. Now, what are the 5 attributes of God's sovereignty? Attributes of God in a religious context. The first, that is aseity. The second, that is eternity. And third, graciousness. Fourth, holiness. Fifth, immanence. Sixth, immutability. Or seventh, impossibility. And eighth, impeccability. In brief, the sovereignty means the authority of a state to govern itself or another state. It is a supreme political power or supreme authority. Sovereignty in political theory, the ultimate overseer or the authority in the decision-making process of the state and in the maintenance of order, derived from the Latin sovereignus. Through the French souverainete, the term was originally understood to mean the equivalent of supreme power.